So we were started with the hypertension. So we are basically seeing anti-hypertensive drugs. So as I told you, anti-hypertensive drugs, they are very important for your GPAT Niper and other exams, because a lot of questions they are going to come from the anti-hypertensive chapter, or you can say drug acting on CVS. Drug acting on cardiovascular system is very important. Drug acting on cardiovascular system is very important. A lot of questions they used to ask from this drug acting on cardiovascular system. So we have started with this chapter. Before that we have seen cardiovascular system. Then we have started this anti-hypertensive drugs. In that also we have seen how there is a control how there is a control of blood pressure. Am I audible you clearly? We have seen how there is a regulation of blood pressure. Remember this formula: blood pressure is equal to cardiac output into peripheral vascular resistance, or simply peripheral resistance. So peripheral resistance, that is nothing but the it is offered by your arterioles. Okay, so small arteries. So they resist the flow of blood, that is known as a peripheral resistance. So anything that will increase the cardiac output, any factor that will increase the cardiac output, any factor that will increase the peripheral resistance will increase the blood pressure. So basically there are three four reasons for blood pressure. So तीन चार reasons कौन से? Because first you have to understand the reasons for particular disease. Once you understand the reasons, you can plan the strategy for treatment. Okay, so what are the reasons for blood pressure? Blood pressure क्यों बढ़ता है? So first reason, overactivity of sympathetic nervous system. So if there is a increased activity of sympathetic nervous system, means release of noradrenaline, so that increases the blood pressure. Second reason for blood pressure is nothing but the second reason for blood pressure, kidney disease or any. Okay, second reason for blood pressure is a kidney problem. Third reason, third reason for blood pressure third reason for blood pressure is vascular disorder, blood vessel disorder. अगर आपके blood vessel में कोई दिक्कत है, suppose your elasticity of blood vessel is damaged, so that also result in the increase in the peripheral resistance. First reason, overactivity of sympathetic nervous system. Second reason, if there is any disease of kidney. Third reason, if there is any disease of vascular or blood vessel disease. Fourth reason, metabolic issue. So if there is increased sodium, if there is increased hormonal, okay, if there is any heart disease, say for example, if there is a increased cardiac output. Okay, fourth reason, if there is increased blood volume कौन increase करता है? Kidney करती है. So increased blood volume, increased cardiac output, increased peripheral resistance, increased cardiac output, increase the blood pressure. So there are the reasons for blood pressure: overactivity of sympathetic nervous system, then then disease of kidney, then vascular disease, or then next hormonal. Okay, then next metabolic, sodium and sodium intake. So these are the reasons for blood pressure. We have seen how there is a control of blood pressure, regulation of blood pressure in the last session. After that we have seen this normal blood pressure. Okay, and what is meant by hypertension. Okay, so blood pressure chart we have seen. Okay. After that we have seen what are the targets for your antihypertensive agent. So you can decrease the sympathetic activity by using central sympatholytics. Okay, like your alpha 2 agonist. Okay, then by using false neurotransmitter. Then third target, you can block the ganglia. Okay, you can deplete the neurotransmitter, right? Catecholamine depleters. You can block the ganglia like hexamethonium, trimethophan. Then you can block the adrenergic neuron. Okay, so dopamine, etc., etc. Adrenergic neuron blocker. Then okay, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, अगर सिंपैथेटिक सिस्टम आपको ब्लॉक करना है. ओके, देन यू कैन आल्सो ब्लॉक द action on effector. So alpha receptor, you can block alpha receptor blocker, alpha blocker. In that also you are non-selective. So indoramine, pentolamine, phenoxybenzamine, they are the non-selective. But prazosin, terazosin, doxazosin, they are the selective alpha blockers. Then come to the beta. Okay, so beta पहले तो अपन alpha block करेंगे to decrease the peripheral resistance. So selective, non-selective. Then come to the beta. In there also you have different beta blockers.
non-selective beta blockers, selective cardioselective beta blockers, then beta blockers with the intrinsic sympathomimetic activity, then beta blockers with the vasodilator property. Okay, alpha plus beta blocker. Okay, so in that also you have 5 classes. Then ganglionic blockers we have seen. Okay. Then in the kidney, you can say in the kidney you can block the renin, you can block the angiotensin second formation, or you can block the angiotensin second receptor also. Okay. Then you can dilate the blood vessel by using vasodilators. Vasodilators, in that also you have different subclasses like arteriolar dilator, those which will dilate the artery, then venodilator which will dilate the veins, arterio plus venodilator. Okay. So in the arteriolar dilator, one of the class is calcium channel blocker. In that also you have 3 subclasses. Okay, then alkylamine derivative, diabenzodiazepine derivative, and then diatropyrimidine derivative. Okay, so we have, these are nothing but targets. So we have also seen the classification. Okay, so diuretics में आता है आपका, okay, फर्स्ट क्लास डायरेटिक्स में 3 आता है, थायजाइड, आइसिलिन, पोटेशियम स्पेरिंग. पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको एग्जांपल से याद रखना है. So spironolactone, iprelenone, then amiloride. Spironolactone, iprelenone, amiloride. Okay, so these are nothing but the potassium sparing diuretic. Okay, spironolactone, iprelenone, they are also known as a aldosterone antagonist, also known as aldosterone antagonist. बाकी ये लूप diuretic जो होता है furosemide. And remember first line drug used in the treatment of hypertension, that is a hydrochlorothiazide. Thiazide diuretics, they are first line drug used in the hypertension. Okay, then indapamide, chlorthalidone, zipamide, they are also another drugs belonging to thiazide category. Then renin, angiotensin, aldosterone axis inhibitor. So in that ACE inhibitor, they will prevent the conversion of angiotensin 1 to the angiotensin 2. All these are the prils: captopril, inapril, lisinopril, perindopril, ramipril, posinopril, quinapril, tyrenopril. सब pril आएगा इसमें. ठीक है, captopril is not a prodrug. Then okay, captopril is not a prodrug, and then याद रखना है आपको, captopril is not a prodrug. Then lisinopril is not a prodrug. Okay. Captopril, lisinopril is not a prodrug. दो बुक में मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये दिया है, कैप्टोप्रिल, लिसोप्रिल, दे आर नॉट प्रोडक्ट. कुछ बुक्स में और एक दिया है, आई थिंक रैमिप्रिल. सो रैमिप्रिल इज आल्सो नॉट प्रोडक्ट. ठीक है, बाकी सब प्रोडक्ट है. उसका मेटाबोलाइट होता है प्रिलेट, जैसे इनाप्रिल. सपोज दैट इनाप्रिल, इसका इनाप्रिल का एक्टिव मेटाबोलाइट क्या होगा? इनाप्रिलेट, है ना. पेरिंड्रोपिल, पेरिंड्रोप्रिलेट, प्रिलेट लगा दो. आर यू गेटिंग माय वॉइस? सेकंड आता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, 81 ब्लॉकर. सो ऑल द सर्टन्स, लो सर्टन, कैंडिसर्टन, वालिसर्टन, टेलिसर्टन, सर्टन आएगा. डायरेक्ट रेनिन इनिबिटर, रेनिन इनिबिटर उसमें क्या आएगा? एलिस्काइरिन, कैलिस्काइरिन. एंड आल्सो रिमेंबर बीटा ब्लॉकर्स दे आर आल्सो रेनिन एंटागोनिस्ट. बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मतलब एलिस्काइरिन, कैलिस्काइरिन ये एग्जांपल है, बुक में दिया है, बट बीटा, okay, so all the beta blockers, non-selective or selective beta 1 blockers, all these beta blockers, what they will do, they will block the beta receptor. And you know that one of the reason for activation of renin, angiotensin, aldosterone system is nothing but the decrease in the blood flow. The decrease in the blood flow to kidney, okay, will stimulate the beta 1 receptor present in the kidney, and that produces the renin by stimulating the juxtaglomerular cells of kidney. Okay, so beta blockers, they are also having anti-renin activity. तो बीटा ब्लॉकर्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ रेनिन एंटागोनिस्ट, और उसमें ऑप्शन में ये नहीं था एलिस्काइरिन, कैलिस्काइरिन, वहां पे ऑप्शन था बीटा ब्लॉकर. बीटा ब्लॉकर इज आल्सो रेनिन एंटागोनिस्ट. देन वी हैव सीन ड्रग एक्टिंग ऑन sympathetic system, so sympatholytics. So in that you are going to have central sympatholytics, so clonidine and methyl dopa, they are the central alpha 2 agonist. What will they do? They will prevent or they will control the release of noradrenaline. Then in that also you have, in that after that you have ganglionic blockers, you have adrenergic neuron blockers, etc, etc, false neurotransmitter. So they are also 3 categories. Then again you can block the alpha receptor, alpha blockers, all the okay, this phenoxybenzamine, pentolamine, and tolazoline. Phenoxybenzamine, pentolamine, tolazoline, they are known as a non-selective alpha blockers.
and then this parazosin, terazosin, doxazosin, tamsulosin, alprazosin, they are known as the selective alpha 1 blockers. Then beta blockers, in that all the laws, propranolol, metoprolol, atenolol. So out of that, propranolol is a non-selective, metoprolol is a cardioselective beta blocker. It is a prototype for cardioselective beta blocker. Then atenolol and other like celiprolol, they are the beta blockers. So in that also alpha plus beta blockers. So they are known as a carbidiolol and labetalol. Carbidiolol, labetalol, they are known as a alpha plus beta blockers. बीटा ब्लॉकर में भी दो चार कैटेगरी होता है, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सिलेक्टिव और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, then beta blockers with the intrinsic sympathomimetic activity, then beta blockers with the vasodilator property, then beta blockers, okay, beta plus alpha blockers. तो याद रखो ये दोनों अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, कार्बिडाइलॉल, लैबेडोल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. Then we have seen the vasodilators. In that you are going to have different classes like vasodilator, proper vasodilator. Some will dilate the artery, arteriolar dilator. So hydrolyzine minoxidil diazoxide, hydrolyzine minoxidil diazoxide. तो आप blood vessel को dilate कैसे कर सकते हो? How you can dilate blood vessel? So either you can increase the production of nitric oxide, blood vessel will be dilated. You can increase the production of nitric oxide. So hydrolyzine is doing same thing. Diazoxide, they are also doing same thing. Now minoxidil, it is opening the potassium ion channel. It is opening the potassium ion channel. Okay. Then again you can also prevent, or you can also dilate the blood vessel by blocking the calcium ion channel. So how you can dilate the blood vessel? By blocking the calcium ion channel, by producing the nitric oxide, or by opening the potassium ion channel. Okay. So arteriolar dilator, hydrolyzine minoxidil diazoxide, arterio plus veno dilator, nitroprusside. Okay. अभी वेन को dilate कौन करेगा? Only venodilator. They are known as a nitroglycerin, organic nitrates. So organic nitrates. Okay. So there are three category in the vasodilator. याद रखना है आपको. Arteriolar dilator, hydrolyzine minoxidil diazoxide, venodilator, organic nitrates, and arterio plus venodilator, sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside का fresh solution बनाना पड़ता है. So we have to prepare fresh solution of sodium nitroprusside, and it has very short duration of action. Then आपका calcium channel blockers, in that you have three category: phenylalkylamine derivative, verapamil and norverapamil. Verapamil and norverapamil, phenylalkylamine derivative. Benzodiazepine derivative, diltiazem. Diltiazem ये क्या है? क्लास 1 ड्रग है. ये दोनों भी क्या है? क्लास 1 ड्रग है as per the biopharmaceutical classification. They have high lipid solubility and high permeability. Class 1 drug. Then dihydropyrimidines, nifedipine, felodipine, amlodipine, nitrodipine, lecidipine. Then ये सब डिपिन है. Lurset, lurcanidipine, benidipine. So out of that, amlodipine is a longer acting. Amlodipine is longer acting and it is supplied in the S isomer. S isomer होता है उसका, वो सप्लाइड किया. Nifedipine, amlodipine, felodipine, nitrodipine, ये सब डिपिन. Anti-hypertensive drug. So we have seen this also. So you can block the adrenergic nervous system. How you can decrease the sympathetic outflow? Okay. So you know that this, you know that after recognizing any threat, your brain will activate the sympathetic nervous system known as a thoracolumbar outflow. Thoracolumbar outflow. So what will happen? So there is a release of noradrenaline. Now this is known as a ganglia. So before if there is a junction of nerve or neuron, okay, before the effector cell, it is known as a neuron. It is known as a ganglia. Okay, in the CNS, it is known as a ganglia. Outside the CNS, it is known as a ganglia. Okay, so ganglia, you can decrease the sympathetic outflow by blocking the ganglia. So how you can block the ganglia? By using ganglionic blockers. So examples are nothing but a trimetopharm, and trimetopharm and hexamethonium, ganglionic blockers. Now you can also prevent the synthesis of noradrenaline, because क्या होता है कि sympathetic outflow बढ़ गया, noradrenaline बढ़ गया, तो blood pressure बढ़ता है. You can prevent the synthesis of noradrenaline by using false neurotransmitter. So example है tyrosine. What will it do? It will prevent the conversion of tyrosine to dopa.
So you can block this also. So tyrosine is a false neurotransmitter. Again डोपा बन गया, डोपा मतलब डाइहाइड्रोक्सीफिनोलालैनिन, बाद में उसका डोपा का डोपामाइन बनेगा, डोपामाइन बनने के बाद में ये क्या होगा, स्टोर होगा, किसमें होगा, सिनेप्टिक वेसिकल. ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल. So after formation of dopamine, dopamine is stored in the synaptic vesicle, and in the synaptic vesicle, dopamine is converted into noradrenaline, and then it will be released. So now this storage, you can deplete this storage by using catecholamine depleters. Example is nothing but the rezerpine or resiramine. They are known as the Raoul Pia alkaloids. Raoul Pia alkaloids. They are alkaloids used in the both hypertension as well as psychosis. This is known as adrenergic neuron. ये क्या है, adrenergic neuron है. So noradrenaline will be released. Now it can be blocked by adrenergic neuron blocker, gonethidine. So gonethidine is adrenergic neuron blocker. It is a presynaptic alpha 2 receptor which controls the release of noradrenaline. ये presynaptic alpha 2 receptor होता है, वो control करता है. तो इसके agonist जो है, देखो, who controls the release of noradrenaline? Presynaptic alpha 2, and another one is there, presynaptic beta 1. So beta blockers, they also decrease the outflow of sympathetic nervous system centrally. जो ब्रेन में जो बीटा 1 प्रेजेंट है उसको ब्लॉक करेंगे ये ड्रग, तो वो भी central alpha 2 agonist, they are clonidine and methyl dopa. Beta blockers also, they decrease the sympathetic outflow, remember. Now after release of noradrenaline, it will act on a postsynaptic receptor or effector cell. So either act on a alpha receptor, or it can act on a beta receptor. So beta is present in the heart, alpha is present in the blood vessel. By blocking the alpha, you can decrease the peripheral resistance and blood pressure. So prazosin, terazosin, and other drugs, indorama. You can also block the beta receptor by using beta blockers in that you are different classes. We have seen this already. Are you getting or not? समझ रहे आपको? Are you getting or not? So we will see centrally acting drug first. Whatever I have discussed, it is already been discussed, but still I have revised you again. Centrally acting drug. तो centrally acting drug म्हणजे काय? Centrally acting drug means क्या होता है? Those drug which will decrease the sympathetic outflow, because increased sympathetic outflow, increased secretion of noradrenaline, that is associated with the hypertension. So you have to control, you have to prevent that. Okay, overactivation of sympathetic nervous system. So centrally acting drug, in that you have clonidine, clonidine, then guanfacine, clonidine, guanfacine. Okay, so there are few other drugs also. So what is clonidine? It is a potent antihypertensive. Potent होता है, potent antihypertensive. Okay, it is a imidazoline derivative. Imidazoline derivative. याद रखें, imidazoline derivative. Now it is acting as an agonist to the presynaptic alpha 2 receptor. Presynaptic adrenergic receptor. Presynaptic alpha 2 receptor. Now activation of this receptor causes decrease in the release of noradrenaline. So activation of this receptor causes decrease in the release of noradrenaline, which will decrease your blood pressure. It also reduces the plasma renin activity. तो renin का भी activity कम करता है, मतलब dual action. So central alpha 2 agonist decreases the noradrenaline and reduces the plasma renin activity. इसके adverse drug reaction जो है ना वो होता है. So it causes drowsiness because it is centrally acting. Dryness of mouth, देखो what it will do, it will block the, or it will prevent the release of, or it will decrease the sympathetic outflow in the brain, है ना. ब्रेन में ही सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम करेगा. तो बाद में देखो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर में न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, बोथ फॉर योर सिंपैथेटिक प्लस पैरासिम्पैथेटिक, यू नो दैट इट इज acetylcholine, and for post synaptic you know that for sympathetic it is a noradrenaline mostly, and for parasympathetic it is a acetylcholine mostly. बट ये ब्रेन में क्या होता है, दोनों भी प्री गैंग्लियोनिक जो है acetylcholine होता है, राइट. सो what this centrally acting drug do, they will decrease both sympathetic outflow as well as parasympathetic outflow, and because of that they are going to have adverse effect. and कौन से भाई, drowsiness, okay, dryness of mouth because of their vagolytic, vertigo, constipation, ये सब क्या है, वर्टिगो, कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस ऑफ माउथ, ये सब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के एडवर्स इफेक्ट है. बस यहाँ पे भी सेम है. क्यों? क्योंकि सेंट्रल में अगर सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम कर रहा है, मतलब सिंपैथेटिक बोलना छोड़ दो आप, वहाँ पे आउटफ्लो कम कर रहा है किसका, है ना, जो सिग्नल वहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है ना, सेंट्रल में. बट सेंट्रल में
जब प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर होता है इन सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक, उसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटिलकोलिन। हाँ, पोस्ट गैंग्लियनिक जो होता है उसका दोनों का डिफरेंट होता है, जैसे सिंपैथेटिक का नॉरएड्रेनालिन होता है और पैरा का आपका एसिटिलकोलिन होता है। बट ये सब कार्यक्रम कहाँ पे चल रहा है? ब्रेन में चल रहा है। तो ब्रेन में ब्लॉक करेगा तो दोनों को भी ब्लॉक करेगा, विल decrease the outflow of sympathetic nervous system as well as parasympathetic nervous system, and that's why due to decrease in the outflow of parasympathetic nervous system also, so there is a dryness of mouth, vertigo, constipation. It can produce impotence, GI disturbances. Then rebound rise in the blood pressure, rebound rise in the blood pressure after sudden stoppage of treatment. तो इसका withdrawal symptom होता है. So you cannot stop this clonidine suddenly. Suddenly you cannot stop clonidine. It is not given by intravenous route. अगर इंट्रावेनस रूट से देंगे ना, so what will happen? There is a sudden rise in the clonidine level in the body. You know that it causes the rebound of blood pressure. That's why it is given orally, and dose is also low. Okay? So rebound rise in the blood pressure after sudden stoppage of, it can develop a withdrawal symptom. So what are the therapeutic uses? So it is used in combination with the diuretics for the treatment of blood pressure, for the treatment of hypertension. Then also used in the menopausal hot flush. मतलब जो लेडीज है 35 इयर्स के बाद में जो मेनोपॉज आता है, उनमें क्या है कि उनमें हॉट फ्लश आता है। उनका हॉट फ्लश मतलब उनका कभी भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। एंड टू कंट्रोल द सिम्टम्स आफ्टर ओपिएट्स, मतलब ओपिएट पॉइजनिंग, ओपिएट विड्रॉल सिम्टम जो होता है उसके बाद में, ओपिएट मतलब अपना मॉर्फिन, कोडिन, थिपेन, देन अल्कोहल, देन निकोटीन विड्रॉल। सो इट इज आल्सो यूज्ड इन द निकोटीन विड्रॉल। सो आपको अभी ये देखो, यहाँ पे एक ही लाइन है, कौन सा? निकोटीन विड्रॉल। तो आपका क्वेश्चन कैसा बनता है? देखो, विच ड्रग इज यूज्ड इन द सिगरेट स्मोकिंग सीजन। आपको क्वेश्चन आता है ड्रग यूज्ड इन द सिगरेट स्मोकिंग सीजेशन, तो आपको तो पोपट बन जाएगा। ठीक है। सो निकोटीन विड्रॉल यहाँ पे टर्म आया। निकोटीन विड्रॉल मतलब निकोटीन का है, सिर्फ आपका गाय चाप में थोड़ी होता है, निकोटीन आपका सिगरेट में भी होता है, राइट। सो सिगरेट स्मोकिंग सीजेशन is one of the use. Okay, so cigarette smoking cessation के लिए भी clonidine यूज करते हैं। So clonidine is used in the treatment of hypertension along with the diuretics, also used in the treatment of menopausal hot flushes to control the symptoms, withdrawal symptoms after opiate, alcohol intoxication, and also used to control the nicotine withdrawal. Okay, cigarette smoking. Now it is used in the diagnosis of growth hormone deficiency. Used in the diagnosis of growth hormone. तो guanfacine जो है ना, again it is similar drug to the clonidine, but it has a less adverse effect and longer duration of action. So clonidine समझ में आया? क्लोनिडीन समझ में आया क्या? यस और नो? नेक्स्ट है आपका अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डोपा, अगेन इट इज a centrally acting drug. So it is a similar drug to the clonidine, similar drug to the clonidine, not structurally, but मिथाइल डोपा इट इज अ प्रोड्रग। क्या है? प्रोड्रग, अल्फा मिथाइल डोपा। सो इट इज अ प्रोड्रग। व्हाट इज द मैकेनिज्म? सो अल्फा मिथाइल डोपा is converted into alpha methyl tyrosine. Okay, so that is the active metabolite. Okay, then alpha methyl dopa is lastly converted into alpha methyl noradrenaline. So alpha methyl noradrenaline is not a true noradrenaline. So alpha methyl dopa is a okay, isomer of methyl dopa. Isomer of methyl dopa has a structural similarity with the dopa, dihydroxyphenylalanine. Dopa मतलब dopamine नहीं, dihydroxyphenylalanine. So alpha methyl dopa, it is a prodrug. It is converted into active metabolite. Isomer of methyl dopa, structural similarity with the dopa and metabolized to alpha methyl noradrenaline in the neurons, which act initially it will activate the alpha 2 receptor. Initially it will activate the alpha 2 receptor in the vasomotor center and also inhibit the renin release. Alpha 2 agonist plus renin inhibitor. It can produce hypertension after period of, initially it will act as a alpha 2 agonist, है ना, बाद में ये हाइपरटेंशन कर सकता है। इनिशियली इट विल प्रोड्यूस हाइपोटेंशन, बट लेटर ऑन इट कैन प्रोड्यूस हाइपरटेंशन। डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। एडवर्स रिएक्शन क्या है इसके? अगेन एज इट इज सेंट्रली एक्टिंग, सेडेशन इज देयर, देन हेडेक, फटीग, ऑन सीनेस, it will decrease the intellectual drive and thinking capacity.
It can produce drowsiness, forgetfulness, nightmares, रात में आपको भयानक सपने आएंगे. Hyperprolactinemia, prolactin level बढ़ा देगा. It can produce gynecomastia, mental depression and GIT upset. ये भी कर सकते हैं GIT upset. Tolerance to the pharmacological activity. Okay. Tolerance to this alpha methyl dopa can produce fever, drug fever, accompanied by alteration in the liver function test. Is a cholestatic changes. मतलब ये क्या करेगा, आपका जो बाइल है उसको ब्लॉक कर देगा, है ना. उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी में ये है ना बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा. दैट इज नोन एज कोलेस्टेटिक जॉन्डिस. टॉलरेंस टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन डेवलप. ओके. इट प्रोड्यूस अ फीवर accompanied by alteration in the liver function test. तो ये liver function test को भी alter करेगा. That is adverse drug reaction. And again it can produce direct positive COM test. That is a direct antibody test. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है. Which drug produces the positive COM test? Alpha-methyl dopa. Alpha-methyl dopa will produce positive. तो एडवर्स रिएक्शन याद रखो, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, ड्राउजीनेस करेगा, फॉरगेटफुलनेस करेगा, नाइटमेयर करेगा, हाइपरप्रोलैक्टेमिया, गायनेकोमेस्टिया करेगा, मेंटल डिप्रेशन के सिम्टम भी आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, फेलियर टू इजैकुलेशन, आर्थाल्जिया, स्किन रैश. क्योंकि ऑब्वियसली अल्फा मिथाइल डोपा इज सेंट्रल अल्फा agonist, so it will decrease sympathetic outflow as well as parasympathetic. Most of the adverse reactions they are because of the blockage of both system. Positive antibody test याद रखना, COM test, it will produce a positive COM test. पॉजिटिव कॉम टेस्ट. वैसे एंटीबॉडी नहीं होता है बॉडी में, फिर भी ये टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है. दैट्स व्हाई इट प्रोसेस डायरेक्ट एंटीबॉडी कॉम टेस्ट पॉजिटिव हो गया. नाउ यू कैन सी द mechanism of action of both. Alpha methyl dopa that is converted into noradrenaline. So converted into noradrenaline, methyl noradrenaline. Now it stimulates the alpha 2 receptor of vasomotor that decreases, that leads to decrease in the sympathetic drive. तो यहाँ पे sympathetic drive मतलब रिलीज sympathetic activity कम होगा by negative feedback mechanism at alpha 2 receptor at nerve ending. अभी ये decrease in the sympathetic drive will result in the two action. sympathetic activity decrease होगा मतलब noradrenaline कम हो जाएगा, तो vasoconstriction नहीं होगा, मतलब क्या होगा, vasodilation. So decrease in the sympathetic drive will result in the two action, vasodilation, decrease in the heart rate and force of contraction. अभी देखो हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन डिक्रीज हो गया, तो क्या डिक्रीज होगा, कार्डियक आउटपुट. एंड वैसोडाइलेशन हो गया तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. सो यू नो दैट blood pressure is equal to this peripheral resistance into cardiac output. So alpha methyl dopa, it is converted into methyl noradrenaline which stimulate the alpha 2 receptor which decreases the sympathetic drive, that leads to vasodilation and decrease in the peripheral resistance, also result in the decrease in the heart rate and force of contraction. Later on, decreases the cardiac output. So you know that blood pressure is equal to cardiac output into peripheral resistance. So final action is nothing but the decrease in the blood pressure. That's how methyl dopa and clonidine will act. समझ रहा है आपको? Are you getting or not? Are you getting or not? Next is nothing but the okay. Next is nothing but the moxonidine and reminidine. Okay, both are the drug related to clonidine. ये भी है ना, दोनों भी clonidine के जैसे है. moxonidine and relminidine, both are the drug related to clonidine. They are the selective cerebral imidazole receptor agonist. इसके ऊपर क्वेश्चन एक बार आ चुका है. selective imidazole receptor agonist, moxonidine. So they will do same thing as that of the your clonidine. तो आप बोलेंगे सर वहाँ तो सेलेक्टिव अल्फा टू रिसेप्टर है ना, प्री सिनेप्टिक अल्फा टू स्टिमुलेंट था, यहाँ पे आपने इमिडाजोल रिसेप्टर एगोनिस्ट बोल दिया. So imidazole receptor is again having role in the expression of alpha 2 receptor. Imidazole receptor agonist also they become a alpha 2 agonist to alpha 2 stimulant. So moxonidine and relminidine, moxonidine, both are the drugs similar to your clonidine. They are the imidazole receptor agonist. So it again reduces the central sympathetic drive. मतलब ये भी again
अल्फा 2 जैसे एक्शन दिखाएगा, आपका नॉरएड्रेनालिन का कम करेगा. Okay, and decreases the peripheral vascular resistance, has less adverse effect than above 2. मतलब above 2 मतलब कौन सा, अल्फा मिथाइल डोपाइन क्लोनिन, उनसे एडवर्स इफेक्ट कम है इसका. Okay, so remember, then next one is a ganglionic blocker. So ganglionic blocker, इसमें आएगा आपका दो ड्रग, ट्राइमिथोफार्म एंड एक्सोमिथोनियम. Okay, so एक्सोमिथोनियम blocks the cholinergic impulse transmission. आपको मालूम होना चाहिए कि in the neuron you have, है ना, nicotinic receptor. There are two type of nicotinic receptor, NM and NN. तो होता है ना NM होता है एक, है ना, NN होता है and NM. So NM जो है that is present at the neuromuscular junction, and N is present in the ganglia. So ganglionic blockers, what they will do? They will block this NN receptor. Ganglionic blocker, they will block the NN receptor. There are two type of nicotinic receptor, NM and NN. So NM and NN. NM receptor is present on the neuromuscular junction, और NN जो होता है, NN जो होता है, that is present on the neuron. That is known as a neuromuscular. That is known as a ganglia. So these drugs, they block the NN receptor. Exomethonium, then trimethophan, they decrease or block the cholinergic impulse transmission. Okay, impulses in the autonomic ganglia, and these blockages result in the reduction in the amount of noradrenaline released from nerve ending. आप बोलेंगे सर एसिटिल कोलिन का क्या संबंध है? बिकॉज प्री गैंग्लियोनिक जो होता है, मैंने बोला है, और both pre-ganglionic nerve neurotransmitter for sympathetic as well as parasympathetic. Pre-ganglionic is a acetylcholine and post-ganglionic is a different. For sympathetic noradrenaline is there, for parasympathetic acetylcholine is there. But जो गैंग्लिया है उसके ऊपर एसिटिलकोलिन होता है, सो दैट्स व्हाई न्यूरोमस्कुलर उसको गैंग्लियन के ऊपर कौन सा रिसेप्टर रहेगा, एसिटिलकोलिन का, एन receptor, and N is present in the ganglia, NM is present in the neuromuscular junction. So these drugs block this NM receptor, N receptor, and decreases the amount of noradrenaline released from the nerve ending, and thus they will decrease the blood pressure. They are not used nowadays because of high incidence of adverse effect. इनको adverse effect बहुत ज़्यादा होते हैं, and lot of new drugs are there. So okay, trimethophan camphor sulfonate, because of the extreme transient action, transient मतलब short duration, it is given IV intravenously to control the hypertension for a short period during the surgery. Remember, it is a drug of choice in treatment of dissection of aorta. Aorta का dissection मतलब aorta का सर्जरी किया है, aorta का, है ना, उसमें ये ट्राइमेथोफार्म drug of choice. Then another drug होता है mecamylamine. Mecamylamine is another ganglionic blocker used for the smoking cessation. Also used for smoking cessation. Mecamylamine, और आपका क्लोनिडीन भी होता है, क्लोनिडीन as well as mecamylamine. Mecamylamine is a ganglionic blocker for now adrenergic neuron blocker, है ना, आपने देखा है adrenergic neuron blocker. पहले तो क्या हुआ, गैंग्लियनिक, सबसे पहले तो क्या कर सकते, देखो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए बहुत सारे रीजन है, बट मोस्टली इंपॉर्टेंट रीजन क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए, कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिवेट होता है. जैसे मान लीजिए कि दो लड़कियां है ना, दो लड़कियां बोलते हैं हम बहुत ही ज्यादा जिगरी दोस्त है ना, दुनिया को देखने के लिए पूरे कॉलेज में पता है कि ये दोनों इतने जबरदस्त दोस्त है, दो लड़कियां एक में के बिना जीना नहीं सकते, रह नहीं सकते, है ना. तो होता क्या है कि, है ना, होता क्या है कि एक को उसके पापा स्कूटी लेके देते और दूसरे को स्कूटी नहीं, तो दिन भर उनका सेलिब्रेशन चलता है कि नहीं यार, सेल्फी विद माय बेस्टीज, न्यू स्कूटी, है ना, फेसबुक के व्हाट्सएप पे चलते रहता है उनका. लेकिन रात में क्या होता है कि वो जब घर पे जाती है, दूसरी जो होती है ना, जिसको स्कूटी नहीं मिला है, तो उसके दिमाग में टेंशन चलता है, यार मेरे को नहीं मिला स्कूटी, उसको स्कूटी ला के दिए, मेरे को नहीं दिए, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. Why? Because of the jealousy, because of the hatred, because of the tension, है ना. तो नॉर्मली क्या हो रहा है
कि आपको ब्लड प्रेशर कब बढ़ना चाहिए, जब आपके सामने थ्रेट हो, जैसे आपके सामने टाइगर आ गया तो आपका जोर 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 से दिल धड़केगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो जब टाइगर चला जाएगा, जब घर पे होंगे तो नॉर्मल आएगा ब्लड प्रेशर। बट नाउ रिप्लेस द टाइगर विद द जेलसी, हेट्रेट, है ना। जैसे देखो कॉलेज में गए, एक आधा खड़ूस पियून होता है, एकदम खड़ूस होता है वो, है ना, सिक्योरिटी गार्ड, तो उसको देख के ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्यों? बिकॉज योर माइंड इज ट्रीटिंग दैट threat as a threat or release of noradrenaline. So that's why most of the important cause is nothing but the overactivity of sympathetic nervous system, right? So you can either prevent the synthesis of noradrenaline, you can deplete the noradrenaline from their binding site or storage site. You can control the release of noradrenaline by using alpha 2 agonist. You can block the ganglia using ganglionic blockers, you know. You can also block the neuron, adrenergic neuron, जहाँ पे सब चल रहा है वो, so adrenergic neuron blocker. So example is a guanethidine, है ना, guanethidine, methionidine, depresokine, then beryllium tosylate, they are also the drug. So guanethidine, this is selectively taken up by nerves. ये after absorption nerve में जाता है and act on a post ganglionic sympathetic neuron. Inhibit the ability of nerve impulse to release the noradrenaline. ये भी release कम करता है. Also blocks the uptake of noradrenaline and depletes the noradrenaline from stores. So guanethidine will decrease or abolish the protective cardiovascular reflex mediated by carotid baroreceptor and adrenergic system that result in the severe postural hypotension. याद रखना है, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर का एडवर्स इफेक्ट होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन. पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब क्या कि पोस्चर जब जैसे चेंज करेंगे आप पोस्चर, जैसे आप में कोई अगर सामने खड़ा है तो उसका ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर रेंज में, अगर वो लेट गया तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाए. अगर वो बैठ गया तो उसका ब्लड प्रेशर और भी कम हो जाएगा नॉर्मली, ठीक है. बट इसमें क्या होता है कि चेंज इन द पोजीशन, हाइपरटेंशन ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन, ओके. पोस्चरल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन नोन एज अ पोस्चरल हाइपरटेंशन, है ना. तो वो लेट गए फिर भी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, सो दैट इज अ पोस्चरल हाइपरटेंशन. सो ऑल एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, they are having adverse effect that they can produce postural hypertension. So adverse drug reaction, postural hypertension, biliard chocolate diarrhea, है ना, चॉकलेट टाइप का डायरिया हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, biliard chocolate diarrhea, parotid pain, fluid retention, then bethnidine, debrisoquine and beryllium tosylate, they are the another drugs belonging to adrenergic neuron blockers. तो याद रखना, न्यूरॉन ब्लॉकर्स का एडवर्स इफेक्ट क्या है, postural hypotension, postural hypotension. But all these drugs are the absolute, they are no more used. सब drugs use नहीं किए जाते. Now next one is a catecholamine depleter. Catecholamine depleter मतलब क्या है, ये हकाल देगा, किसको हकाल देगा, कैटेकोलामाइंस को. कहाँ से हकाल देगा, स्टोरेज साइड से, जो सिनेप्टिक वेसिकल होता है वहां से हकाल देगा. कौन है भाई, कैटेकोलामाइन डिप्लीटर, उसका नाम है रेजरपिन. रेजरपिन को अपन क्या बोलते हैं, पगले की दवा. इट इज अल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम राउलपिया सर्पेंटिना, पगले की दवा, है ना. So it is antihypertensive as well as antipsychotic. So reserpine will deplete noradrenaline, dopamine, 5-HT, all catecholamines from their storage site. From their storage site. Their storage site. Centrally as well as peripherally. Reserpine binds to the storage vesicle on the both central as well as peripheral adrenergic neuron. The binding persists for a long time and inhibit both granular uptake and storage of catecholamine. So its action क्या है, pharmacology action. So it will produce hypotension, bradycardia, decrease in the peripheral resistance, reduction in the cardiac output, that contributes the
anti-hypertensive effect. Then it has said, okay, also as an antipsychotic action. It has a sedative, ये थोड़ा सा spelling mistake है. It has a sedative action, sedative and antipsychotic action due to depletion of catecholamine. It increases the gastric acid secretion and augmentation of peristalsis. Peristalsis बढ़ता है. So what are the adverse effect? ये adverse effect क्या है इसके? Excessive salivation, cutaneous vasodilation. तो वहाँ पे feeling of warm, गर्म feeling आएगी. Nasal congestion, नाक नाक में नाक ब्लॉक हो जाएगा. Increase in the peristalsis and acidity due to parasympathetic predominance. क्योंकि क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, इसको हकाल दे रहा है नॉर एड्रेनलिन डोपामाइन ना. तो नॉर एड्रेनलिन को हकाल दिया, एड्रेनलिन को हकाल दिया, तो डोमिनेट कौन करेगा? एसिटिलकोलिन. सो दैट्स व्हाई इट विल प्रोड्यूस excessive salivation, cutaneous vasodilation, nasal congestion, increase in the peristalsis, acidity, you know, due to parasympathetic predominance. Are you getting or not? Yes or no? Again it will produce orthostatic hypotension. Are you getting or not? समझ रहा है क्या? Orthostatic hypotension, again change in the position, decrease in the blood pressure due to change in the position. Orthostatic hypotension. Mental depression, weight gain करेगा, Parkinson करेगा, endocrine disturbances, hypotension and death during the induction of anesthesia due to deficiency of serotonin, due to depletion of catecholamine. Serotonin deficiency will result in the severe depression and suicide tendency. The reserpine. Again, reserpine is no more used, just for studying purposes there. So use नहीं करते. So what are the actions of reserpine? You can see over here. So reserpine is known as a catecholamine depleter, right? So what will it do? So inhibit the storage of biogenic amines in the neuron. मतलब ये इनको हकाल देगा यहाँ से. Noradrenaline, dopamine, 5-HT from the storage side. So that result in the vasodilation, decrease in the peripheral resistance. So ultimately, decrease in the blood pressure, also decrease the cardiac output. Next होता है आपका adrenergic blockers. So adrenergic blocker मतलब क्या? So you know that there are two receptors for adrenaline, noradrenaline. So there is nothing but the alpha receptor and beta receptor, and beta. So adrenergic blockers means alpha blockers and beta blockers. So in the alpha you have two type, alpha 1 and alpha 2. में alpha 1 होता है, alpha 2 होता है. So alpha 1 is present on the smooth muscles of blood vessel, responsible for the vasoconstriction, responsible for the increase in the peripheral resistance. The blockage of alpha 1 decreases the peripheral resistance and ultimately blood pressure. Beta, in that you have beta 1, beta 2, beta 3. So beta 1 is present in the heart, beta 2 is present in the smooth muscles of bronchi, है ना. beta 3 कहाँ पे होता है? It is present in the, yes anybody, beta 3 कहाँ पे होता है? Adipose tissue responsible for the lipolysis, right? So adrenergic blockers means they will block alpha beta receptors. So first we'll see alpha blockers. So in that you have non-selective and selective. Okay. So non-selective, so pentolamine is there, then phenoxybenzamine is there. Okay. Tolazolone is there. Okay. Pentolamine, it has a short duration of action and it is used in the diagnosis of pheochromocytoma. ये pheochromocytoma क्या होता है? It is a tumor of adrenal medulla. जो adrenal gland होता है आपका, उसका अगर कैंसर होगा तो क्या होगा आपको? Pheochromocytoma. Pheochromocytoma, कैंसर ऑफ adrenal gland. So उसका कैंसर होगा तो क्या होगा? So you know that adrenal gland का काम क्या है? To produce adrenaline, noradrenaline, right? So there is increase in the noradrenaline level in the body, which can also contribute to hypertension, right? So pentolamine, it has a short duration of action. It is used in the diagnosis of pheochromocytoma. Question आता है. Pentolamine, okay, because that secretes the noradrenaline. अगर pheochromocytoma हो गया है ना, तो
मेडुला एड्रेनल मेडुला क्या करेगा, नॉर एड्रेनालिन रिलीज करेगा. Pentolamine and tolazolin, they are the drug of choice in the hypertensive emergencies. Clonidine withdrawal and cheese reaction. क्लोनिडीन विड्रॉल क्यों? क्योंकि क्लोनिडीन क्या है, इट है ना, इट प्रोसेस द विड्रॉल सिम्टम्स, रिबाउंड हाइपरटेंशन. और क्लोनिडीन अगर आपने यूज किया लार्ज डोज में और उसको सडनली विड्रॉ किया, व्हाट विल हैपन, रिबाउंड हाइपरटेंशन. सो टू कंट्रोल द clonidine withdrawal, this pentolamine tolazolin they are used. Now also used in the cheese reaction. cheese reaction क्या होता है मालूम है आपको? What is cheese reaction? Yes, anybody? अगर मालूम है तो वो बोलता हूँ. Do you know what is cheese reaction? So what do you mean by cheese? It is made from a milk. इसमें क्या होता है, मिल्क से बना होता है. इसमें होता है टायरामाइन. इसमें क्या होता है, टायरामाइन. तो टायरामाइन इज अ प्रीकर्सर फॉर नॉरएड्रेनालिन. तो चीज खाया आपने, मिल्क प्रोडक्ट खाया आपने, है ना, या फिर फ्रूट्स खाए, तो उसमें टायरामाइन होता है. दैट इज अ प्रीकर्सर फॉर नॉरएड्रेनालिन. नॉरएड्रेनालिन लास्ट में इसका नॉरएड्रेनालिन बनता है. एंड लास्टली दैट कंट्रीब्यूट द हाइपरटेंशन. So if you are using these, okay, if you are using alpha blockers or if you are using these drugs, anti-hypertensive drugs, and if you are using cheese, butter, milk product, so what you are doing, you are at the one hand you are blocking the noradrenaline, but at one end you are supplying the noradrenaline in the form of tyramine. because tyramine का conversion होता है ना इसमें noradrenaline. So that increases the blood pressure in the cheese reaction. So clonidine withdrawal and cheese reaction. Phenoxybenzamine, long-acting alpha blocker, used to treat the preoperative preparation with the pheochromocytoma. Used to treat the preoperative preparation of pheochromocytoma patient. Pheochromocytoma of the patient में blood pressure बढ़ चुका होता है. To control that, phenoxybenzamine is used. Then it is a non-selective alpha blocker. Non-selective alpha blocker देखो, pentolamine, tolazolin, phenoxybenzamine याद रखना है. नेक्स्ट होता है आपका सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स. सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स कौन है भाई? सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स जोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, है ना, अल्प्रोजोसिन, टैम्सोलोसिन, ऑल दीज आर द सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स. तो क्या है ये? क्विनाजोलिन डेरिवेटिव है. इज अ क्विनाजोलिन डेरिवेटिव act as a peripheral vasodilator by selectively blocking alpha 1 adrenergic receptor. ये अल्फा 1 ब्लॉकर है. It is ineffective in blocking pre-synaptic alpha 1. ये सिर्फ पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1 को ब्लॉक कर सकता है, प्री सिनेप्टिक अल्फा 1 नहीं. प्री सिनेप्टिक मतलब क्या? सेंट्रल. प्री सिनेप्टिक अल्फा 1 मतलब सेंट्रल, है ना. और ये अल्फा 1 कौन सा है? ये इज अ पोस्ट सिनेप्टिक. पोस्ट सिनेप्टिक मतलब क्या? इट इज प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल. ये ब्लड वेसल के ऊपर होता है ना, ब्लड वेसल. रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल. अगर एक्टिवेशन हो गया इसका अल्फा 1 का, ब्लड वेसल क्या होगा? कंस्ट्रिक्ट हो गया तो क्या होगा? पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है. दैट्स व्हाई यू हैव टू ब्लॉक दिस अल्फा 1 बाय यूजिंग प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, अल्पोजोसिन. So adrenergic receptor blocker. Okay. Vasodilator act by blocking the selective alpha 1 post-synaptic alpha 1 block. It is a relatively ineffective in the blocking alpha 1 presynaptically, and there was a less okay, there were less likely to cause reflex tachycardia. So it cannot block. So it is not blocking the presynaptic alpha 1, and that's why it will not produce you reflex tachycardia. Direct vasodilator, they will cause a reflex tachycardia. डायरेक्ट वैसोडाइलेटर जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैल्शियम, जैसे आपका है ना सोडियम नाइट्रोक्साइड, उसके बाद में हाइड्रोलाइजिन, मिनोक्सिडिल, डाइऑक्साइड. So all these drugs, they are a direct vasodilator and they will produce reflex tachycardia. But alpha blockers will not produce because they are not blocking presynaptic alpha 1 receptor.
They are blocking alpha 1 receptor postnatal, which is present in the blood vessel. It does not affect the renal function, cardiac output and renin angiotensin axis. ये जो अल्फा ब्लॉकर्स है इनका कोई रोल नहीं है. They will not decrease cardiac output. They will not affect the renin angiotensin axis. मतलब ये renin angiotensin aldosterone को उसको ब्लॉक नहीं करेंगे. They will not decrease the cardiac output, but they will decrease the blood pressure by blocking the alpha 1, by decreasing the peripheral resistance. Are you getting or not? समझ रहा है आपको या नहीं? Yes, are you getting? एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है इसके? सो याद रखना है फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन, गिडीनेस, ड्राउजीनेस, टायर्डनेस, वीकनेस, नोशिया, डायरिया, fluid retention, palpitation and nervousness, impaired ejaculation in the male, males में ejaculation impair होगा. They are used to treat the congestive cardiac failure. These drugs are also used in the treatment of benign prostate hyperplasia. Benign prostate hyperplasia, prostate gland का cancer, benign prostate hypertrophy or hyperplasia, both with obstructive symptoms. Terazosin, doxazocin, alpuzocin, they are the analog of prazosin. Terazosin and doxazocin, these two are the longer acting. Prazosin is a drug of choice in a scorpion sting. Scorpion sting मतलब क्या होता है कि हम गाना गाते हैं ना, मुझे बिच्छू लड़ गए रे मेरे पीछे पड़ गए रे, तो वो जो बिच्छू है अगर बिच्छू ने काट लिया, मुझे बिच्छू लड़ गए रे मेरे पीछे पड़ गए रे, स्कॉर्पियन स्टिंग, बिच्छू ने काट लिया तो ड्रग ऑफ चॉइस कौन से? अल्फा ब्लॉकर्स, पर्टिकुलरली प्राजोसिन. टेराजोसिन, डॉक्सोसिन क्या है? ये दो लॉन्गर एक्टिंग है. टेराजोसिन, डॉक्सोसिन, दे आर लॉन्गर एक्टिंग. ठीक है. अभी ये जो है अल्पुजोसिन, उसके बाद में एक आता है टैमसोलोसिन. अल्पुजोसिन, टैमसोलोसिन. टैमसोलोसिन एक ड्रग आता है इसका. ये अल्फा 1 जो रिसेप्टर है, पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 1, it is not only present in the blood vessel, it is also present in the prostate gland. prostate gland में भी होता है. और alpha 1a, alpha 1a, so alpha 1a is present in the prostate gland and selective alpha 1a blocker कौन है? Tamsulosin, alpuzocin and tamsulosin, they are the highly selective alpha 1a blocker. मतलब they will block the alpha 1 receptor present in the prostate gland, and that's why they are the. Tamsulosin is a drug of choice in case of benign prostate hyperplasia. Tamsulosin is a drug of choice in case of. Are you getting or not? समझ रहा है कि नहीं? So क्या करेगा प्राजोसिन? डांस नहीं करेगा. क्या करेगा? प्राजोसिन block the alpha 1 receptor in the arterioles. Arterioles क्या है? Small blood vessel responsible for the resistance to the blood vessel. Resistance to the blood flow, and that is known as the peripheral resistance. So these arterioles, they offer a peripheral resistance. कौन देता है? Arterioles देता है. प्राजोसिन क्या करता है? It will block the alpha receptor on the arterioles. Arterioles मतलब smooth muscles of arteries. So what will happen? So that result in the alpha 1 का रोल क्या है? Alpha 1 stimulation result in the vasoconstriction. इसको ब्लॉक करने के बाद में क्या होगा? vasodilation and arteriolar dilation. So decrease in the peripheral resistance. That result in the decrease in the peripheral resistance and decrease in the blood pressure. So also decreases the sympathetic outflow, causes the vasodilation, decreases the peripheral resistance. Lastly, decrease in the blood pressure. क्योंकि क्या है? ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेजिस्टेंस. जो भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ाएगा ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, जो भी पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम करेगा ब्लड प्रेशर कम करेगा, जो भी कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जो भी कार्डियक आउटपुट कम करेगा